the characteristics of algorithm. The characteristics of algorithm is, the first one is, an algorithm is capable of accepting Similarly, we can observe that algorithm can accept. When comes generality, now what does this generality means? मतलब ये है कि it can be used for solving any kind of problem. Can be solved for any kind of problem. Suppose when we write the statements, we write input statement for input purpose. We write print for showing or displaying the result or a message. Similarly, this is termed as generality. Then definiteness. Definiteness means the algorithm that we write, those have a definite set of instructions, and each instruction execute in a definite set of time. Inputs those we ask, we keep them in a definite equation or in a definite variable. So all these we can see, these all are definiteness. Means algorithm cannot be indefinite in any manner. Number 4, uniqueness. What is uniqueness? Is every step in an algorithm is unique. It performs some other task. And if a number of if a particular statement needed to be executed a number of times, if there are similar kind of statements, we have to club them. We have to combine them. We learned it. In the previous classes. Fitness. What is fitness? Fitness is algorithm have to solve a problem in a certain number of steps, and every step perform a different task. अगर हम लोग आप एक लिखे algorithm लिखे, if you have written the algorithm, you need to check the fitness or the execution of that particular algorithm using sample data, or sometimes we say dummy data, so that we can get the result, we can get the output. That is categorized under output. That's all in algorithm. So hopefully all of you have understood how to write an algorithm. Now, every time we say that if we have a number of similar kind of tasks, similar kind of statement, say combine karna. But we had never seen an algorithm in which we had combined those statements, isn't it? So today I will show you an example of that. Before that, I saw Ronit Raj. Yes, Ronit? Sir, I am not able to listen, sir. You are not able to listen. Anyone else have the Sir, listening problem? I किसी को और को सुनाई नहीं दे रहा होगा तो बताना जरा. If anyone else is not able to listen. सर हमको पूरा धीरे धीरे सुनाई दे रहा है. My goodness, how can I help that man?
हाउ कैन आई हेल्प दैट? तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन increase the volume, use a headphone, or use a speaker or amplifier. अब मैं क्या बताऊँ रोनित, ये तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का, है बताओ? Okay, sir. No, sir. Try to listen carefully, okay? Pay attention, you may be able to listen, okay? I'm not my microphone, let me check what is the uh, volume of my microphone set. मैं एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलती से मेरा ही गड़बड़ हो गया। ना ना ना, my microphone is working nicely, and my volume is also 100%. Let me test it out. Yeah, while testing, what is the input percentage? 98%। 98% वॉइस पिकअप कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है रोनित। एंड एवरीवन एल्स इन द क्लास, इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन लिसनिंग मी, that may be some problem from your side. And my internet also, I have changed the internet connection previously. Before the vacation I had an internet connection of a speed of 10 Mbps. Now I have a internet connection of 60 Mbps. So from my side also, there is no problem about internet also. मेरा internet speed बढ़िया है. So we are today going to take some example. जो हम लोग बोल रहे थे कि we are going to take the example of writing the statements, similar kind of statements together. एक साथ में बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स को एक बार में कैसे लिखेंगे, ये देखना है. नाउ फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, एंड people, please come to the class on time. Now onward, no one I will allow to enter the class. किसी को आने नहीं देंगे, कोई रहे. Palak Kumar is there. I'm not going to allow you. Anyone is not allowed anymore. कितना देर तक इंतजार करेंगे? 15 मिनट हो गया, and you have no time to get into. Now, let us assume a program or a problem to accept. I'm writing that problem for you. Problem को हम लिखते हैं, ठीक है? Problem को हम लिख रहे हैं. If you want, why should you want? You have to copy it also. Right? B नहीं दिख रहा है ना? ओके, यहाँ पे नंबर्स है, नंबर्स हम लिख रहे हैं मगर किसी कारण से नहीं दिख रहा है. एंड the question is, write an algorithm to accept 5 numbers and find their sum. Now, if we have been doing the previous way, पिछले तरीके से करते तो कैसे लिखते? दोनों तरीके बताएंगे, जो तुम लोग लिखोगे या जो हम लोग सीखे हैं पहले, तो कैसे लिखेंगे. Always the step 1, step 2,
Now, observe these 5 steps. They are the same thing. एक ही चीज है, सिर्फ वेरिएबल का नाम बदला है। अच्छा, 5 नंबर को जोड़ने के लिए वेरिएबल लेना जरूरी है या 5 नंबर जरूरी है? 5 नंबर जरूरी है। वेरिएबल लेने का क्या जरूरत है? वेरिएबल नाम एक ही है और उसी एक वेरिएबल में 5 बार हम लोग अलग अलग नंबर डाल देंगे, इट विल वर्क द सेम, it will do the same thing. Although we cannot be able to find what are the individual numbers, हम लोग बाद में ये पता नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग कौन कौन सा नंबर डाला गया था। That's very true, हम लोग वो नहीं कर सकते। मगर ये भी नहीं, क्या हो रहा है कि ये अगर करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, क्या हो रहा है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना। So is there other way around? We can write it. Obviously, there is another way. So I'm going to do that. For that reason, I'm going to clear out the board and write the steps again. Okay. So I'm going to clear the board. Ten people are waiting in the waiting hall. Last हम ले लेते हैं. Now, how to write those things that we had written previously. जो हम लोग पहले लिखे थे उसको कैसे अब लिख सकते हैं? तो step 1, as usual, start. Step 2, those who came late today, although I allowed you today, from next day I will not allow you. 11 बजे का टाइमिंग है, 11:20 का नहीं। तुम लोग 20 मिनट बाद आओगे, 15 मिनट बाद आओगे। बना के रखा है, क्लास चल रहा कि मजाक चल रहा। नेक्स्ट ऑनवर्ड 11 o'clock is the time, 11:05 is the last. I will not allow anyone to enter after 11:05. 11:05 के बाद किसी को घुसने नहीं देंगे। You keep on waiting, keep on going in and out, I don't mind. You have been given a time. There is 20-minute gap between every teacher's period and still you are late for the class. ठीक है, मान सकते हैं कि 11 बजे तक था तो 11 से 11:15, 11:10 हो गया मेरे क्लास में आने में। ऐसे तो नहीं है, 10:40 में वो क्लास खत्म होता है, 11 बजे ये क्लास शुरू होती है। So next day onward, don't be late. If you are late, you stay outside. Now see here, हम लोग क्या किए, let the sum equals to 0. ठीक है, सम को 0 कर दिए। Step 3, I का वैल्यू दिया, I equals to 1. ठीक है, now
Now see here, if you compare the previous one, अगर previous वाले algorithm और ये वाले algorithm को मिलाए, सर एक स्टेप तो बढ़ गया, एक स्टेप तो ज्यादा है, तो वही तो अच्छा था, लग सकता है. But if it is 50 steps, if it is of 50 numbers, उसमें तो 50 लिखना पड़ेगा अलग अलग, मगर इसमें नहीं. उससे स्नेहलता, यस स्नेहलता. Sir, in that step also there was 9 steps only. Here also was also 9. No, I think Yes, sir. whatever it is. So you have Yes, written here is, step for 2 times. step for 2 times I have written, correct. So that also is of 9 steps. Okay, fine. So now see, although the number of steps may be same for this program, but if the program was of 50 steps, अगर उसमें 50 नंबर जोड़ने बोला जाए तो उसमें तो 50 स्टेप्स प्लस 4 स्टेप्स, मतलब 54 स्टेप्स होगी पिछला तरीका से. मगर इस तरीके से क्या होगा, यही 9 स्टेप्स ही होगा, because what we had did over here, see carefully, we had taken a variable I. Oh, ये नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर हमको टाइप ये करना चाहिए था. Don't think it is cut out. Let me see. Yeah. So ये वाले step we had defined a variable I. The value is 1. Then over here we had increased the value of I by 1. I को बढ़ा दिए और यहाँ पे क्या किए, चेक किए I का वैल्यू कितना है. इस स्टेटमेंट पे हम लोग चेक कर लिए I का वैल्यू क्या है, और अगर 5 से कम है या 5 के बराबर है, then we are going back to step 5. Isn't it? So फिर 5 से जाएंगे तो 6 फिर से चलेगा. I make a mistake, man. This must be 4. I enter a number. This is 4. This is 4. Make it correct. Do the correction. Do the correction. This is step 4. Go to step 4. तो क्या होगा, स्टेप 4 में जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे नंबर लेना है. तो फिर से ये नंबर लेगा, फिर जोड़ेगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, फिर पूछेगा if the value I is smaller than 5, if it is yes, then it goes to step 4. Now this way we can execute a certain statement for a number of time. इसी तरीके से जब हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं तो उस एल्गोरिथम में एक स्टेटमेंट को बार बार इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. समझ में आया? Now take one more example. एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा. Now let us print write an algorithm to print the multiplication table of 13. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13 प्रिंट करना है. कैसे करेंगे, कितने बार चलना चाहिए, 10 बार चलेगा.
13 into 1, 13 into 2, 13 into 3 till we reach 13 into 10. So what we do? First step is start. This is step. I think all of you can understand this is step. Okay, so go to now step 6. So see here, we had not even used 10 steps. 10 स्टेप भी नहीं लिखे और हम लोग का 13 का टेबल प्रिंट हो गया. कैसे प्रिंट हुआ है? आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव दैट आइडिया कैसे प्रिंट हुआ होगा. आई क्या वैल्यू 1 एंड वी हैड प्रिंट 13 into i. आई क्या वैल्यू कितना है? 1 है. तो प्रिंट कितना होगा? 13 into 1, isn't it? That is 13. Then we have increased the value of i over here. यहाँ पे i क्या वैल्यू बढ़ा दी है और यहाँ पे चेक किए if i smaller than 11. अगर 11 से छोटा है तब go to step 3. तो ये कहाँ जाएगा? मगर अब जब यहाँ पे पहुंचा तब देखो i का वैल्यू क्या हुआ था? चेंज हो गया था, है ना? अब की बार i का वैल्यू हो गया 2, 1 से इंक्रीज हो गया था. तो अब क्या प्रिंट करेगा? 13 into 2. फिर यहाँ आया i का वैल्यू अब हो गया 3. 2 plus 1 3. यहाँ पे आया if i smaller than 11, yes it is. Then go to step 3. तो i का वैल्यू कितना है अभी? 3. क्या प्रिंट करेगा? 13 into 3 39 प्रिंट होगा. i का वैल्यू बढ़ गया 4. Is it smaller than 11? Yes. Goes back to this part. That is 13 into 4. It will print 42. Similarly, this program will execute till the value of I remains smaller than 11. Okay. So only 10 minutes left. So let me take the attendance first, then we may continue our discussion. So I'm going to stop the sharing of the screen now. Okay. So take the attendance first. This is 8B. Joshua. So first one in the class, Ayush Ranjan. Today is 24. Ayush Ranjan,
Kumar, then Aditya Raj, then we have Akhil Ranjan and Ananya Chandra, then Anurag Bharti, then Aryan Nayan, एक देख रहा है अक्षत राज पुष्कर बाहर इंतजार कर रहा है, दे देते हैं बच्चे को अटेंडेंस। Then we have अविनाश कुमार, है भूमिका सिंह, इसके बाद है कृष्ण कुमार, इसके बाद है माधव कुमार, MD Sameerullah, and Muskan Kumari, D, and Nida Rashid, Shika Bandwal, इसके बाद है रोनित राज, इसके बाद है साइबा फिरदौस, इसके बाद है सौरभ कुमार, है। अब है शौर्य सक्षम, शिवानी कुमारी, then स्नेहा कुमारी, then स्नेहलता कुमारी, then सौरभ कुमार, then Nati Raj, पहली बार, and Vanya Chaturvedi also for the first time in the class, isn't it? Last two guys are the first time in the class. Although I know they were attending the other classes, they know everything about computer, so they were not attending the computer classes. I'll see your results. The school will be open soon. I think yesterday there was some message on paper about the reopening of the school. I didn't have read it, but it will be opening soon. Okay, now, so attendance is over and there is very little time left, only 5 minutes around. So if you people have any doubt, you can ask. You can raise your hand to ask your doubts. Any doubts you have? No. No doubts at all. All of your doubts are clear. Yes, Snehata. Sir, multiplication algorithm. I shown you now. Just now I shown you the multiplication table of 13, and for that purpose, instead of using the cross sign, there we cannot type in the multiplication sign. But there for multiplication there is the asterisk sign, star वाले sign है, तो star वाले sign हम लोग को use करना पड़ता है multiplication के लिए. Okay, now Ronit Raj, Ronit. सर जो आप मल्टीप्लिकेशन बताएं 13 का, उसमें जहां आप यूज किए 13, वहाँ हमेशा कोई भी टेबल रहेगा तो यहाँ यूज कर सकते हैं ना, और लिख देंगे सिर्फ. हाँ, सेम थिंग, जस्ट यू नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ 13. अब 13 की जगह पे तुम एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम भी यूज किया जा सकता है. कल अब अगले दिन हम लोग करेंगे क्या, 1 to 10 सबका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, तब तो समझ में आ जाएगा ना.
Ronit? Yes. Okay, next day we'll do Yes, that. sir. Okay. Okay, next day we will do that. We will write an algorithm to print the multiplication table of all the numbers from 1 to 10. सबका multiplication table बनाएंगे तो बढ़िया सा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा. Okay, we will do that in the next class. Just remind me once, Ronit, if I forget. Okay. Okay, okay, sir. Okay then. Anyone else have any other doubt? If you have, then raise your hand. And स्नेहलता तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, हम बंद कर दिए. Anyone else have any other doubt or any other suggestion you want me to solve? You want me to write the algorithm of that particular problem? If you have those suggestions, as Ronit said that. Yes, Ronit again. सर अगर हम घर में प्रोग्राम बना रहे हैं और हमको चेक करना है तो सर आपको व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींच के भेज सकते हैं? बेटा देखो, भेज तो सकते हो, जो सच है, भेज तो तुम सकते हो, मगर क्या है कि देखो हम लोग भी सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लास लेते हैं, उसके बाद घर संसार का काम भी रहता है हम लोग को. तो ये हो सकता है कि तुम्हारा जो चेक करेंगे उसका रिस्पॉन्स देने में टाइम लग जाएगा. दैट्स वेरी ट्रू. ये तुम लोग भी समझ सकते हो, है ना. यू कैन सेंड मी, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है. यू कैन सेंड मी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. डू एनीबडी हैव एनी अदर प्रॉब्लम? I don't think so. So I'm going to close the class today. That's 50 seconds left for the class. Okay. So get prepared for the next class if you have, and have a nice day.